preparing for MBA Entrance Exam Timeline. तो उसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे. 2026-27 साइकिल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को डेफिनेटली मिस मत करना और इसको एंड तक आप देखिए, राइट, बिकॉज इसमें जो इंफॉर्मेशन है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. So what we are unlocking is MBA entrance exam timeline, right? So you might be preparing for one of these or maybe a couple of entrance exams out of this. So let's look at the timeline, and the best part is you just prepare for one exam, that is CAT, and with little bit of modification, you can give all these exams, all or any of these exams, you can say, right? So the first exam is NMAT. So this is for NMIMS admissions, and the three attempts you can take between November 5 to December 19. तो आई वुड रिकमेंड कि एक अटेम्प्ट आप ले लो इसका नवंबर में ही, क्योंकि आपका प्रिपरेशन हो सकता है जून मई में शुरू हो गया होगा. तो एक अटेम्प्ट इसका आप नवंबर में डेफिनेटली ले लेना, कि क्या है, आपको जब कैट का एग्जाम जब तक आ जाएगा आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना. फिर दूसरा जो है आपका नवंबर 29 में इट विल बी कैट. तो एवरी टाइम, एवरी लास्ट संडे, most of the times it was last Sunday of November. Last Sunday of November is CAT exam day. So by that time you can give CAT also, and the result will be expected in January. So you can see most of the results are out by January, February. Only Maharashtra MBA CET will be little bit late, right? If you are from any other state, then there are like exams, state level exams for admissions. So TN CET is one exam, right? So that for that you have to check maybe their official website. But here, if you are in Maharashtra and you are preparing for multiple exams, then this is how you can look at the timeline, right? And how you will use this timeline is you have all the dates and when the results are going to come. So accordingly, you can plan your own MBA entrance exam schedule and the kind of combo that you are going to have. Right? In December 5, it will be SNAP, and December 13, December 19. So इसकी तीन डेट होती है. इसमें से कोई भी डेट में आप दे सकते हो, या तीनों अटेम्प्ट भी आप दे सकते हो. ठीक. फिर इसके बाद होता है जैट का एग्जाम, जो एक्जिला रहता है जनवरी में. इसमें आपका एक अटेम्प्ट होता है और इसमें एडिशनल सेक्शन जो है वो जनरल नॉलेज. तो मैंने ये भी मेंशन किया है कि इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. एनमैट में आप क्वांट और लॉजिक पे फोकस करेंगे, और फुल लेंथ मॉक्स आपने लेने हैं, सेक्शनल मॉक्स लेने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं. तो ये मोर ओवर सब एग्जाम्स के लिए सेम होगा. सिर्फ एग्जाम का फॉर्मेट अलग होता है थोड़ा बहुत, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो जब आप पीवाईक्यू हर एक एग्जाम के सॉल्व करोगे, तो देन यू विल गेट अ nick of things, like what sort of questions are there, and accordingly you can modify whatever you have learned during your CAT preparation. Right? जैट में एडिशनल सेक्शन इज जीके, और इसमें एक ऐसे भी आता है, तो उसकी अलग से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. और जैट के क्वेश्चन ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा. MBA CET इस बार दो अटेम्प्ट है, दो अटेम्प्ट आप दे सकते हो. तो पहला अप्रैल 6 से अप्रैल 8 के बीच में है, और दूसरा मई 9 को है. ऐसा सा कुछ इनका शेड्यूल है ऐसा. तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर. अगर आप सारी ही दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. अगर आप इनमें से दो तीन एग्जाम दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड. अगर स्टेट लेवल टारगेट कर रहे हो कॉलेजेस, तो MBA CET के लिए जा सकते हो. अगर आप IIM टारगेट करना चाहते हो स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली यू ऑल मस्ट बी नोइंग कैट इज द एग्जाम. अगर आप सिम्बोसिस ट्राई कर रहे हो, सिम्बोसिस पुणे या अदर सिम्बोसिस कैंपसेस, देन यू कैन गो फॉर स्नैप. अगर आपको एक्सिलराई जाना है तो आप जैट एग्जाम के लिए जा सकते हो. ये सब हो गया एक शेड्यूल. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस which might be helpful for you, right? Then you will look at another slide, which is MBA entrance preparation plan.
Now, my students, most of my students are from non-engineering background. That's why I have written non-engineering background. But each and every student can follow this or maybe modify a little bit. So phase वन will be your foundation building. So नींव हमेशा अच्छी होनी चाहिए. और ये होता है कि some students they are coming from typically non-engineers, so they lose their touch with cons sometimes, logical reasoning as well. So they can just brush up or they can just reconnect with arithmetic, algebra basics, number systems, geometry. तो आपका जो भी लेवल का फाउंडेशन है कॉन्ट्स में, वीएआरसी में, वीएएलआर में, उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ मिस आउट किया है ड्यूरिंग योर स्कूलिंग एंड योर जूनियर कॉलेज and also in your grads, then you can just then you can just refine that, right? In VARC, reading habit you have to develop, which is very important, right? So maybe in foundation stage you will try to read two paragraphs a day, or maybe every alternative days you can read three paragraphs, or any strategy which you think is good for you. uh, and reading habit you need to develop, as in if you find philosophical passages interesting, if you find passages from history interesting, or you find passages from science. So all these different areas, passages from different areas, you need to learn. You need to read so that you will develop that reading habit. And most importantly, comprehending that passage is very important. What the author is trying to say, what he is trying to narrate, and the kind of arguments in the passage, and the particular pattern that passage is following. These all things, are fundamental of the ARC, and your foundation will be strong, right? So be it solving parajumbles, understanding the questions also is very important in VARC. Then DILR, data sufficiency, LR, DI, sets, tables, stars, these all like one or two, maybe, one or two sets of DILR you can solve every day. So 15 to 30 hours is what you have to give during the foundation stage. And foundation is very important because all other phases that you can see will be just a little bit of modification or giving twist or just refining as per the particular exam. But foundation definitely should be strong, right? Then CAT centric preparation you will start in the month of September, and October it will be CAT centric preparation. So during this time, whatever fundamentals you have or foundation you have built, you will just uh, you will just focus particularly on CAT exam, solve PYQs maybe. You will refine your algebra, and if uh, there are there are certain passages from CAT uh, CAT VARC and CAT paper that you will solve. So, for example, this paper CAT 2026, it is said that mostly it will be coming from IIM Indore. So you can practice PYQs of IIM Indore paper, which was CAT 2020 I believe. 2020 का पेपर IIM इंदौर का था, और 26 का भी कह रहे हैं कि IIM इंदौर से आएगा, तो उसके पीवाईक्यूज आपने करने हैं, और साथ ही साथ अदर पीवाईक्यूज भी हैं तो वो आप कर सकते हो, राइट? DILR में आपको कैट लेवल का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए कि 40 मिनट है, तो 40 मिनट में आपके एक सेट हो रहा है, दो सेट हो रहे हैं, दो से ज्यादा हो रहे, तो फिर आपका तो बहुत सही है। अगर दो से ज्यादा सेट आप कर लेते हो तो इट्स इवन बेटर, राइट? योर चांसेस आर ब्राइट। इसमें आपका एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी मेंटेन करना और स्पीड बढ़ाना, ये दो चीजों पे आप कैट सेंट्रिक प्रिपरेशन में फोकस कर सकते हो, राइट? फिर इसके बाद आता है फेज 3, कैट वन और एनमैट का मिक्स प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो कैट का जो कुछ बचा बच गया है तो वो आप देख सकते हो इसमें, और एनमैट का प्रिपरेशन यू कैन स्टार्ट। तो एनमैट का जो पेपर अलग से अलग फॉर्मेट रहेगा,
So you can just focus on NMAT based preparation as well. During the month of November, you can take one attempt of uh, one attempt of NMAT in November itself, right? फिर इसके बाद आपका आएगा फेज 4। उसमें एनमैट और स्नैप का सीजन होता है, तो इसमें आपको दिसंबर में एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन करनी है, राइट। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन कर रखी है कई सारी। सो यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट। हो सकता है डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे जाए, बट लगभग यही डेट्स रही है आज तक, तो यही डेट्स में होगा, राइट। फिर इसमें आपका गोल होना चाहिए अच्छा स्कोर करना है एनमैट और स्नैप। जब तक when you will be in January you will have more clarity कि आपने एनमैट स्नैप और कैट देने के बाद इसमें आपके क्या स्कोर आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपको जैट के लिए जाना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर जैट एज वेल। अगर तो आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं और आपको अभी जैट का अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, अब आपने कैट का इतना प्रिपरेशन किया है तो आप कैट 2 के बारे में सोचो। तो या तो जैट या तो कैट का सेकेंड अटेम्प्ट, ये आपने सोचना है ये फेज में कि आपने जैट देना है, क्योंकि जैट का आपको फिर थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको जाना है, आपको कैट के साथ ही रहना है और आपको आईआईएम या फिर जो कैट के थ्रू जो कॉलेजेस क्रैक होते हैं उनमें एंट्री चाहिए, तो कैट का सेकेंड अटेम्प्ट भी आप सोच सकते हैं। तो ये हो गया आपका फेज 5। फेज 6 डेफिनेटली आपने इतनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है, तो महाराष्ट्र सीईटी का आपको फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उस पर क्या क्वेश्चन आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैसे अलग है, तो ये सारी चीजें आपको महाराष्ट्र सीईटी के लिए देखनी पड़ेगी। देन एग्जाम का फीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। तो उसमें लगभग अगर आप सारे एग्जाम्स भी देते हो तो आपका एक 20 से 25 हज़ार रुपये आपका जाने वाला है, तो इट विल बी लाइक 20 to 25,000। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इज NMAT, 3,000 प्लस टैक्सेस फॉर एवरी अटेम्प्ट, राइट। तो एक 10,000 you have to invest in NMAT only। देन स्नैप का थोड़ा बहुत कम है, सबसे कम है महाराष्ट्र सीईटी का, right? फिर इसके रिजल्ट्स डेट्स भी मैंने मेंशन की है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स।